40. The Prime Minister of India, Honorable Shri Narendra Modi ji, has a dream for a Viksit Bharat, a developed India as we complete 100 years of our independence. And this is where the chemicals and the petrochemical sector has a huge contribution to make. It is expected to contribute around $2 trillion to India's economy and make its own contribution in fulfilling the vision of Prime Minister Narendra Modi ji. I'm very proud to say that presently, India's chemical industry is the 6th largest in the world and 4th largest in Asia. And the government of India is dedicated to fostering the growth of this sector by means of policy initiatives, streamlined regulations, and infrastructure development. Under Prime Minister Narendra Modi's guidance and leadership, the sector is witnessing significant progress and driven by several initiatives and measures like Make in India, Production-Linked Initiative, and the National Industrial Corridor Development Program. All these specific measures aim to boost manufacturing, reduce our import dependencies, and enhance the global competitiveness of the Indian industry. We're making strategic investment in infrastructure, also research and development, and the green technologies and cleaner practices to promote sustainable growth. India's manufacturing sector has shown a remarkable growth, which is fueled by policy reforms, a rising demand, domestic demand, particularly from the burgeoning middle class. And by 2030, India's middle class is projected to account for the 2nd largest share of global consumption. Friends, FDI has also played a pivotal role in enhancing the growth and competitiveness of India's chemical sector, which includes petrochemicals and the specialty chemicals. The country has become an attractive destination for FDI, allowing foreign direct investment in manufacturing through the automatic route. From April 2000 to March 2024, cumulative FDI equity inflows in all the manufacturing sectors reached $97 billion, and over the past decade, chemical sector has attracted $12.5 billion in investments, with approximately $6 billion being received in just last 5 years. To support the growth of this sector, we have also established the PCPIRs, the Petroleum Chemicals and Petrochemicals Investment Regions across the country, which offer state-of-the-art infrastructure and favorable business policies. Our 3 PCPIR regions in the 3 partner states, Gujarat, Odisha, and Andhra Pradesh, have collectively attracted investments of $30 billion. They're generating an employment of about 3.7 lakh, with 824 units already commissioned. As I said earlier, government is also supporting research and development initiatives to foster innovation. Development of new products, processes, and technologies in this sector is occurring at a fast pace. We've commissioned 13 centers of excellence in the petrochemical sector, and 5 new centers have been added. Further, the scope of these centers of excellence has been expanded to include the chemical sector as well. We're also investing in the skill development through programs and institutions like CIPIT, the Central Institute of Petrochemical Engineering and Technology. The aim is to prepare our youth to meet the demand of this growing chemicals and petrochemical sector. CIPIT also has 46 centers nationwide and has trained lakhs and lakhs of individuals over the past decade.
Sustainability is at the heart of India's vision for the future. And in line with our commitment to the Paris Agreement, we are actively promoting the principles of green chemistry and clean technologies. Indian chemical industry is gradually shifting towards renewable energy resources, reducing carbon emissions, and embracing sustainable practices across its value chain. Our focus on circular economy practices is ensuring that India not only. There is also a need for research into novel materials such as polymers, composites, nanomaterials for various industrial applications, including packaging, construction, electronics, and healthcare. At the same time, industry needs to enhance its efficiency and productivity through optimization of the chemical processes. Emerging new areas such as the development of bio-based chemicals and biopolymers and products to minimize and utilize renewable feedstocks. Integration of circular economy principles to ensure sustainability from production to disposal and developing technologies for converting waste plastics and other chemical waste back into the useful chemicals is the need of the current times. The effort of our Department of Chemicals and Petrochemicals and FICCI in organizing India Chem 2024 are instrumental in bringing together industry leaders, policy makers, and global stakeholders together, innovations within the sector. And your participation plays a vital role in ensuring continued growth and success of India's chemical and petrochemical industry in the years to come. In the closing, let me reiterate Government of India's commitment to supporting and advancing the chemicals and petrochemical sector. We're determined to provide the right kind of environment for businesses to flourish, for innovation to thrive, that India continues to lead the way in shaping the future of global chemicals and petrochemicals industry. I thank you all and I wish you all the best for your fruitful discussions and business collaborations at India Chem 2024. Thank you all. Jai Hind. Thank you, Honorable Minister, for your thought-provoking and inspiring address. With due respect, I now invite Shri Bhupendra Rajnikant Patel, Honorable Chief Minister of Gujarat, to share his thoughts with us. Gujarat has been at the forefront of industrial growth, particularly in chemicals and petrochemicals. Let's all together welcome him with a thunderous round of applause. भारत सरकार और फिक्की के संयुक्त उपक्रम में आयोजित इंडिया कैम 2024 के उद्घाटन सत्र में हम सब के बीच उपस्थित केंद्रीय मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ एवं यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, मध्य प्रदेश के जनप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, ओडिशा के जनप्रिय मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, ओडिशा के मंत्री श्री संपत चरण शैवान जी, केंद्रीय सचिव श्री निवेदिता शुक्ला जी, दीपक नाइट्राइट के चेयरमैन श्री दीपक मेहता, रिलायंस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री निखिल मेशवानी, फिक्की के चेयरमैन श्री प्रभुदास, इवोन इंडस्ट्रीज के बोर्ड मेंबर श्री क्लोज रेटिंग, उपस्थित सभी उद्योग जगत के अग्रिम महानुभाव, आमंत्रित अतिथिगण, प्रेस मीडिया के मित्र, आप सभी को मेरा नमस्कार। विश्व नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 7 अक्टूबर
1 को गुजरात के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालकर देश में विकास की राजनीति का एक नया अध्याय शुरू किया था। आदरणीय श्री नरेंद्र भाई के नेतृत्व और मार्गदर्शन में गुजरात ने गुड गवर्नेंस सुशासन के सफल 23 वर्ष पूरे कर लिए हैं। माननीय मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में पिछले 23 वर्षों में गुजरात केमिकल और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र का हब बना है। इसलिए देश में केमिकल और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र की बात होती है तब गुजरात का नाम अग्रिम पंक्ति में लिया जाता है। पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई के नेतृत्व में विकास की बदली हुई स्पीड और स्केल को समग्र देशवासियों ने देखा भी है और महसूस भी किया है। देश की जनता ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री जी के विकास के विजन को स्वीकारा है और एक बार फिर उन्हें देश का सेवा का दायित्व सौंपकर इतिहास रचा है। यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मोदी जी के इस गारंटी पर भरोसा है कि उनके तीसरे कार्यकाल में भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक महासत्ता बनेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के साथ साथ हमें विकसित भारत 2047 का विजन भी दिया है। इस विजन के अनुरूप सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ उनके नेतृत्व में हर एक योजना के केंद्र में आत्मनिर्भर भारत का निर्माण है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश में सेक्टर स्पेसिफिक पॉलिसीज फ्रेमवर्क से सेक्टरल ग्रोथ पर फोकस किया है। केमिकल और पेट्रोकेमिकल सेक्टर ऐसा सेक्टर है जो हमारे डे टू डे लाइफ का एक अभिन्न अंग है। केमिकल और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने इस विचार को गति देने के दिशा में एडवांटेज भारत इंडिया केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल पेविंग द फ्यूचर की थीम पर इंडिया केम का 13वां संस्करण प्रारंभ हुआ है। इंडिया केम भारतीय केमिकल और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र की भविष्य की योजना के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है। मेरा मानना है कि यहाँ उपस्थित स्टेक होल्डर्स, इंडस्ट्रीज लीडर्स, एक्सपर्ट्स और इनोवेटर्स के आइडियाज भारत के केमिकल सेक्टर के भविष्य को आकार देंगे। केमिकल और पेट्रोकेमिकल सेक्टर लंबे समय से भारतीय उद्योग का बैकबोन और देश की आर्थिक प्रगति का प्रेरक शक्ति रहा है। भारत में 80,000 प्रकार के अलग अलग केमिकल का प्रोडक्शन होता है और इसी के कारण केमिकल के ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की भूमिका बहुत ही प्रभावशाली और महत्वपूर्ण होती जा रही है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लागू की गई PLI योजना के से देश के केमिकल और पेट्रोकेमिकल सेक्टर को काफी बढ़ावा मिला है। श्री नरेंद्र भाई का विजन है कि भारत में केमिकल का इंपोर्ट घटे, भारत से एक्सपोर्ट बढ़े और केमिकल तथा पेट्रोकेमिकल सेक्टर में भारत आत्मनिर्भर बने। जब देश में केमिकल पेट्रोकेमिकल की चर्चा होती है तो गुजरात का नाम गर्व से लिया जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में गुजरात में पिछले 2 दशकों में केमिकल और पेट्रोकेमिकल सेक्टर में अभूतपूर्व विकास हुआ है। देश के कुल पेट्रोकेमिकल प्रोडक्शन में गुजरात का कंट्रीब्यूशन 62% है। डाइज और इंटरमीडिएट के प्रोडक्शन में लगभग 75% का योगदान गुजरात का है। बेसिक केमिकल से लेकर स्पेसिफाइड केमिकल, पॉलीमर, फर्टिलाइजर, डाइज और पिगमेंट्स में जैसे क्षेत्र में गुजरात ने महारत हासिल कर लिया है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में देश के कुल एक्सपोर्ट में 31% शेयर के साथ गुजरात देश का प्रमुख एक्सपोर्टर स्टेट बना है। हमने वाइब्रेंट समिट में केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के लिए कई सेक्टर स्पेसिफिक सेमिनार्स आयोजित किए थे। इस वर्ष के वाइब्रेंट समिट में केमिकल और पेट्रोकेमिकल सेक्टर में 5,34,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ 3,656 प्रोजेक्ट्स आए हैं।
मजबूत औद्योगिक और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने गुजरात को भारत का पेट्रोकेमिकल कैपिटल बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हमें मोदी जी के विजन के अनुसार मेक इन इंडिया से आगे बढ़कर मेड इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के मंत्र के साथ आगे बढ़ना है। हमें ग्लोबल जाना है, पर मानव जाति का नुकसान और पर्यावरण की उपेक्षा करते हुए कभी भी प्रगति नहीं कर सकते। पर्यावरण की सुरक्षा के साथ हमें पेट्रोकेमिकल और केमिकल क्षेत्र को बढ़ावा देना है। मैं मानता हूं कि इंडिया कैम समिट में पर्यावरण के जतन के साथ इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के विषय पर गहन चर्चा होगी और इफेक्टिव सॉल्यूशन भी निकलेंगे। ये सॉल्यूशन प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत 2047 के विजन के साथ पर्यावरण सुरक्षा को भी बल देंगे। देश की आज़ादी का अमृत काल भारत के विकास का सुवर्ण काल है। प्रधानमंत्री जी की विजनरी लीडरशिप में भारत को इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्लोबल डेस्टिनेशन बनने का यही समय है, सही समय है। आज़ादी के इस सुवर्ण काल में हम सब साथ मिलकर केमिकल और पेट्रोकेमिकल सेक्टर में विकास द्वारा विकसित भारत के निर्माण का संकल्प को साकार करें। यही विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय जय गरवी गुजरात। Thank you, Honorable Minister, for your insightful address and showcasing Gujarat's role in industrial growth. It is now my honor to invite Dr. Mohan Yadav, Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh, to deliver his address. Madhya Pradesh is playing a vital role in chemicals and petrochemical industry under his able leadership. Please join me in welcoming Honorable Minister on the dais. इंडिया केम 2024 के इस बहुउद्देशीय और बहुत उपयोगी कार्यक्रम में यशस्वी हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और सरकार के केंद्रीय मंत्री श्रीमान जगत प्रसाद नड्डा जी, जिनके नेतृत्व में हमारा अपना ये मंत्रालय भी और गणतांत्रिक देश में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हमें इस बात का गर्व है। आपकी ओर से जोरदार ताली बजा करके उनका अभिनंदन करें, वंदन करें, जिनके निमित्त हम जैसे राज्य भी आज एक अलग प्रकार की इस विभाग से जुड़ करके आगे की योजना बना रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें, जिनके नेतृत्व में देश आज एक अलग दुनिया में जा रहा है। हमारे इसी मंच पर विराजमान यशस्वी गुजरात के मंत्री, मेरे अभिन्न मित्र श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल साहब, मेरे हम नाम और मेरे नाम राशि उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन चरण मांझी जी, हमारी इस मंत्रालय की एमओएस मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, माननीय खनिज मंत्री उड़ीसा संपत चंद्र जी, अध्यक्ष फिक्की प्रभुदास जी, दीपक मेहता जी, क्लेश जी, निखिल जी, मंच पर उपस्थित सभी माननीय अधिकारीगण और आप सब, बदलते दौर में खासकर आज के इस समय में जिस प्रकार का यह समय चल रहा है और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने बहुउद्देशीय एक तरह से योजना भी बनाई है और काम भी चालू किए हैं। और यही कारण है कि 2014 के बाद भारत कहाँ 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था पे था और ये 2023 आते आते भारत 5वें नंबर पे आया है। और जिस प्रकार से अलग अलग प्रकार के सबने टारगेट तय किए हैं, खास करके मैं बधाई देना चाहूँगा भूपेंद्र भाई पटेल को। गुजरात का आपने अपना रिकॉर्ड बताया है और हमारे सभी प्रदेशों को समान रूप से आगे बढ़ने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री लगातार प्रोत्साहित कर रहे हैं। और जब से यशस्वी
माननीय मंत्री नड्डा जी बने हैं, वो भी लगातार दोनों तरह से, यद्यपि उनके पास हमारे लिए और आनंद है कि उनका हमारा अपना संबंध भी अलग प्रकार का है, लेकिन विभाग के नाते से स्वास्थ्य मंत्रालय भी और इस मंत्रालय में भी समान रूप से मेहनत कर रहे हैं। इसलिए मध्य प्रदेश को लेकर के मैं कुछ बातें जरूर बताना चाहूँगा। मध्य प्रदेश में आज हमारे अपने बीना में भारत पेट्रोलियम पेट्रोकेमिकल्स की परियोजना 50,000 करोड़ की से अधिक की लागत का हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने भूमि पूजन किया है और इस पे हमने काम चालू किया है। साथ ही साथ गेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का बृहत पेट्रोकेमिकल्स ये परियोजना एक और मंजूर होने जा रही है। मुझे इस बात का गर्व है कि लगभग 60,000 करोड़ से ज्यादा की ये परियोजना भी हमारे अब आखिरी चरण में पहुंची है। पीथमपुर में देश में सबसे पहले सेज को स्थापित करने के लिए जहां 40 से ज्यादा फार्मा इकाइयां अपना काम कर रही है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। मध्य प्रदेश में 275 फार्मा यूनिट स्थापित है। प्रदेश में 160 से अधिक देशों को दवाएं निर्यात हो रही है। दवा निर्यात करने में मध्य प्रदेश का स्थान चौथा है। फार्मा एक्सपोर्ट में 8 गुना बढ़ोतरी हुई है। 2023-24 में 11,890 करोड़ की फार्मा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हुए हैं। देश की टॉप फार्मा कंपनी में से 6 की यूनिट मध्य प्रदेश में स्थापित है। प्रदेश में फार्मेसी और मेडिकल कॉलेजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वर्तमान में 250 फार्मेसी और 35 मेडिकल कॉलेज अपना काम कर रहे हैं। केमिकल पेट्रोकेमिकल्स उद्योग के लिए प्रदेश में अधोसंरचना तैयार है। रायसेन के जिले तामोट, ग्वालियर में बिलोवा में प्लास्टिक पार्क, रतलाम में बृहत फार्मा बायोटेक केमिकल जोन का विकास हो रहा है। झाबुआ के मेघनगर में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित कर केमिकल उद्योग के लिए मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, धार के पास बदनावर में पीएम मित्र पार्क, भोपाल ग्वालियर में केंद्रीय पेट्रोलियम रसायन अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिक संस्थान सीपेट की शाखाएं स्थापित हमने की है। एक के बाद एक लगातार जिस प्रकार से हमारे अपनी सरकार ने भी काम हाथ में लिए हैं, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि वर्तमान के दौर में आज जब माननीय नड्डा जी ने जब से मंत्रालय संभाला है, हमारे लिए और एक अलग संभावना का दौर बना है। ऐसे में जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो मैं अपने प्रदेश को उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए हमने अपनी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव भी प्रारंभ की है। अभी तक हमारे यहाँ आमतौर पर इंदौर में ही इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होती थी। अब उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, इसी माह रीवा, सिंगरौली सभी रीजनल क्षेत्र में इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करते हुए हमने कोशिश की कि क्षेत्रीय उद्योगों के आधार पर सभी प्रकार की संभावना का द्वार मध्य प्रदेश में है। ऐसे में हमारे लिए ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि हम अपने निवेशकों को आमंत्रित करें और निवेशकों को कि मध्य प्रदेश के अंदर जो सरकार के द्वारा दिए जा रहे अलग अलग प्रकार की सुविधाओं से भी उनको रूबरू कराएं। इसलिए न केवल प्रदेश में बल्कि देश के भी अलग अलग सेक्टर में जाकर के हम रोड शो के माध्यम से हमारी निवेश की सभी पॉलिसियों के बारे में बता रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। इस बम्बई सहित बम्बई, कोयम्बटूर, मद्रास, हैदराबाद, कलकत्ता इत्यादि शहरों में हमने अपने रोड शो किए हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि अलग अलग प्रकार से जिस प्रकार से हमको रिस्पांस मिला है, बहुत जल्दी मध्य प्रदेश अब इस सेक्टर में भी बहुत आगे बढ़ेगा। खास करके आने वाले समय में हमारे लिए जब हमारा गेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से ये जो बृहत पेट्रोकेमिकल परियोजना का काम आगे बढ़ रहा है, जिसके माध्यम से सीहोर और आष्टा ये एक तरह से मध्य क्षेत्र है देश का, यहाँ पास में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी है और सभी प्रकार की रेल लाइनें हैं और आसपास का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र भी सभी प्रकार की उद्योग को बढ़ाने की सभी अनुकूलताओं को लिए हुए है। ऐसे में 25,000 से ज़्यादा लोगों को यहाँ रोजगार प्राप्त हो सकेगा। पिछली साल जब माननीय प्रधानमंत्री ने बीना सागर जिले में भारत पेट्रोलियम की फ्लैगशिप पेट्रोकेमिकल्स परियोजना का सफल पूजन किया था, जहां 50,000 करोड़ से अधिक का निवेश होगा और 25,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इन सारे सेक्टरों के साथ साथ खास करके फार्मा के सेक्टर में भी हमारे यहाँ इकोसिस्टम उपलब्ध है। पीथमपुर सेज जो मध्य प्रदेश का सबसे पहला सेज है, लगभग 80 से ज़्यादा फार्मा इकाइयाँ स्थापित है। प्रदेश में कुल फार्मा इकाइयों की संख्या 275 से अधिक है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमने ये लगातार आगे बढ़ाते हुए रतलाम, झाबुआ, इंदौर
ऐसे कई सेक्टर में फार्मा की संभावनाओं को तलाशते हुए इस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में सभी सेक्टर में काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मध्य प्रदेश सरकार अपनी निवेश के लिए खासकर इस सेक्टर में भी आकर्षक फार्मा पॉलिसी बनाने जा रही है। मैं एक बार फिर इस पूरे आयोजन के लिए आपको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, अभी हम उम्मीद कर रहे हैं कि अभी हमारे बीच में जो मैडम शुक्ला ने उल्लेख किया था और हमारे मित्र हमारे माननीय भूपेंद्र पटेल जी ने किया था, तो गुजरात मध्य प्रदेश का जोड़ीदार है और उड़ीसा उसका भागीदार है। मैं उम्मीद करूंगा गुजरात और उड़ीसा के साथ साथ मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला करके नए रिकॉर्ड बनाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। Thank you, Honorable Minister, for sharing Madhya Pradesh's vision, growth and contribution to this industry. With due respect, I now invite Shri Mohan Charan Majhi, Honorable Chief Minister of Odisha, to share his thoughts with us. Please welcome Honorable Minister on the dais. Jai Jagannath. On this occasion of India Chem 2024, on the dais, Honorable Union Minister, Health and Family Welfare and Chemicals and Fertilizers, Sri Jagat Prakash Nadda ji, Honorable Chief Minister Gujarat, Sri Bhupender Rajnikant Patel ji, Honorable Chief Minister Madhya Pradesh, Dr. Mohan Jadhav ji, Honorable Minister of State, Health and Family Welfare and Chemicals and Fertilizers, Anupriya Patel ji, Honorable Minister of State, Independent Charge, Industry, Skill Development and Technical and Education, Government of Odisha, Sri Sampad Chandra Swai ji, other dignitaries on the dais, esteemed industry leaders, senior officials, members of the media, ladies and gentlemen. It is a privilege to address you at the India Chem 2024 and speak about the prospects of chemicals and petrochemicals sector in Odisha. Under the visionary leadership of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, we stand on the cusp of a new era, Purvodaya, the resurgence of Eastern India. Odisha is poised to be at the forefront of this new journey towards a Viksit Bharat. Our state is ready to play a key role in driving India's industrial growth. Odisha, which is known for its rich natural resources, strategic location and leadership in mining and metal sector, is now emerging as a key player in chemicals and petrochemicals. Our chemicals and petrochemicals ecosystem are built on a solid foundation with presence of companies like IOCL, Paradip Phosphates and IFCO, among others. We have developed world-class infrastructure that caters to the needs of industries looking to invest and grow.
RCPIR Paradip is driving Odisha's ambitions in this sector. Strategically located near Paradip Port, this industrial hub integrates a robust supply chain connecting industry to global markets. The chemicals and petrochemicals sector in Odisha is ready for exponential growth, supported by increasing demand from core industries such as steel, aluminium, and petrochemicals. At the same time, we are diversing into further high potential areas. Odisha is actively promoting invest in technical textiles and recycling of byproducts which offer promising growth, plastics and packaging with specialty chemicals which are seeing increased demand from domestic and international markets. Pharma chemicals, a growing area of focus which has tremendous potential for expansion. Anode and cathode chemicals for the expanding battery and electric vehicle markets. Green fuel production to support the global shift towards cleaner energy. These opportunities are supported by Odisha's rich natural resources, extensive connectivity, and robust industrial ecosystem, making it an attractive destination for new investments. Odisha has already seen significant investments from countries' leading companies in the chemicals and allied sectors. Chemical companies like Grasim, Berger Paints, Shalimar Paints, and plastic sector. Leaders like Supreme, Ashirvad, Astral, Sentex, Sri Chakra Polyplast, etc. have expanded their operation in the state, contributing to the growth of downstream industries and creating opportunities across the value chain. Furthermore, key players in technical textiles like EPIC and MS groups, explosives manufacturers like Premier Explosive and CDET, and specialty chemicals manufacturers like Eternis, Epsilon, Sunvira, Silox, Epigral, Himadri, Kiri Industries, BCI Chemicals and others have also found Odisha to be a conducive environment for growth. Their investments are helping Odisha build a diversified chemicals sector that caters to a wide range of industrial needs. Odisha's future in the chemicals and petrochemical sector looks brighter than ever. Our strategic location on the east coast of India, coupled with the availability of skilled labor and industrial infrastructure, gives us an EDG. We are committed to ensuring that industries can grow and innovate in a supportive environment. As global demand for chemicals continues to rise, Odisha is well positioned to play a key role in meeting this demand, not just for India, but for the world. I invite you all to explore the opportunities that Odisha offers and become a part of our growth story. Together, we can unlock new possibilities and contribute to the shared vision of a
Vikasit Odisha. Finally, I would like to inform you that the government of Odisha is organizing the Utkarsh Odisha Make in Odisha Conclave 2025, the state's flagship global investors summit in Bhubaneswar, Odisha on 28 and 29 January 2025. In this context, we are hosting a session on investment opportunities in Odisha tomorrow in Mumbai at Trident Hotel, Nariman Point. I invite you all to join us and explore opportunities in our state. Partner with us in Odisha's growth journey. Invest in Odisha, invest in the future. Bande Utkal Janani, Jai Hind, Namaskar. Thank you, Honorable Minister, for showcasing Odisha's role in industrial growth. We will now proceed with the release of the knowledge paper prepared by FICCI and EY, providing in-depth insights into the chemicals and petrochemical sector. May I graciously request our chief guest, along with guest of honors and other esteemed dignitaries on stage, to kindly release the knowledge paper on catalyzing India's chemicals and petrochemical strategies for global integration and growth, prepared by FICCI and Ernst & Young LLP. With this, ladies and gentlemen, we officially release the knowledge paper. We are now presenting the copies to our guest of honors and esteemed dignitaries on stage. And then we'll request them to please come together for a group photograph. Kindly come together. Can we have a round of applause on the official release of the knowledge paper being prepared by FICCI and Ernst & Young LLP? Many congratulations on the official release. And we thank our esteemed dignitaries for doing the honors. Thank you very much. Ladies and gentlemen, our chief guest has been instrumental in shaping India's progress across both health and chemical sector, playing a key role in driving forward transformative policies that foster innovation, sustainability, and growth. His visionary leadership continues to pave the way for India's advancement in these crucial sectors. It is with immense honor and privilege that I now invite on the dais Honorable Union Minister for Health and Family Welfare and Chemicals and Fertilizers, Government of India, Shri Jagat Prakash Nadda ji. Let's join me in giving him a heartfelt welcome on the dais. I welcome our Gujarat Chief Minister, my esteemed colleague, Shri Bhupendra Bhai Rajnikant Patel, Honorable Chief Minister of Gujarat, my colleague Mohan Yadav ji, Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh, the newly elected Chief Minister, and my esteemed colleague Shri Mohan Chand Maji ji, who is the Chief Minister of Odisha, Srimati Anupriya Patel ji, Honorable Minister of State and Health and Family Welfare and Chemicals and Fertilizers, and my colleague and Minister in Government of India, Shri Sampad Chandra Swain ji, Honorable Minister for Industries Department, Odisha, Srimati Nivedita Shukla Verma, the Secretary, Department of Chemicals and Petrochemicals, Dr. Claus Reddick, who is the member of the Extended Executive Board of Evonik Industries, AG and President of Asia Pacific, Mr. Nikhil Meswani, the Executive Director of Reliance Limited, Mr. Deepak C. Mehta, the Chairman of FICCI National Chemical Committee and the CMD, Mr. Prabhat Das, the Chairman of FICCI National Pharmaceuticals Petrochemicals Committee and MD and CEO of HMEL Mittal Energy and Limited,
distinguished guests, ladies and gentlemen, and the leaders of industry and esteemed dignitaries. It is a pleasure to stand before you at the 13th edition of India Chem 2024, a premier platform for the Indian chemicals and petrochemicals industry. This year's theme, The Advantage Bharat, Indian Chemical and Petrochemicals Paving the Future, reflects India's progress towards innovation, sustainability, and global leadership. I am delighted to welcome the delegates who have gathered here from 22 countries and 63 multinational companies with 200 plus exhibitors and 7,000 visitors who have registered themselves. This event underscores India's global significance in the chemical sector. I extend my gratitude also to Netherlands, our partner country with whom we share a strong bilateral trade, including $2.4 billion in chemicals and petrochemicals last year. I must thank the Chief Minister of Gujarat, of Orissa and Madhya Pradesh who have joined us. This shows their commitment for the development of the petrochemical industry. And the partner states, Gujarat, Orissa and Madhya Pradesh, are also the key players. Gujarat leads with 41% of India's chemical export. Orissa is emerging as a strategic hub, and Madhya Pradesh development like the BPCL petrochemical complex in Bina bolsters its growing role in this sector. India's chemical and petrochemical industry is a vital pillar of our economy, contributing over 9% of the manufacturing GVA, the gross value added, and 7% to total exports, currently valued as $220 billion. We project the industry to surpass $300 billion by 2028 and reach to $1 trillion by 2040. India ranks the 6th largest chemical producer globally and 4th in Asia. We are the 2nd largest manufacturer of dyes and agrochemicals worldwide, with $45 billion exports for the year 2023-24. Our growing middle class and rising demand for consumer goods, textiles, pharmaceuticals, automobiles, and construction materials continue to fuel this sector's expansion. Despite these successes, we must address a significant challenge, that is reliance on the imported feedstock. To achieve Atmanirbhar Bharat, self-reliance India, we must explore alternative feedstocks like biomass, plastic waste, and green hydrogen, while also expanding domestic sources of natural gas and coal. By investing in indigenous resources, we can reduce the vulnerabilities and enhance the industrial security. Sustainability is the future of the chemicals and petrochemicals industry. As the world transitions to greener technologies, India must lead by example. Our companies are already adopting sustainable practices, recycling, renewable energy, and alternative feedstocks that align with global trends. The shift from oil to chemical and the adoption of green hydrogen offer immense opportunities for our industry through a deeper chemical integration, optimized energy use, and circular economy principles. We can reduce our sector's environmental footprints while driving economy growth. Our government has introduced initiatives like Make in India and the National Industrial Corridor Development Program to support the industrial growth. Our petroleum, chemical and petrochemical investment regions in Gujarat,
Orissa, and Andhra Pradesh have attracted investments worth 30 billion US dollars and generated approximately 3.7 lakh jobs. Additionally, the PM Gati Shakti, the National Master Plan, integrates infrastructure projects across sectors, creating synergies to boost productivity and sustainable development. Such initiatives are key to enhancing India's global competitiveness in chemicals and petrochemicals. Innovation and research are essential to driving the future of India's chemical industry. The National Anusandhan Research Fund, with rupees 1 lakh crore, supports the research on bio-based chemicals and eco-friendly processes and novel materials like polymers and composites. The skilled manpower is also critical. The Central Institute of Petrochemical Engineering and Technology, the CIPET, has trained approximately 6.5 lakh people and aims to increase this by 1.2 lakh annually by 2028. Expanding skill development is vital as the sector continues its rapid growth. Safety is crucial to the petrochemical industry, and the department has designed a disaster management module to train 2,400 major accident hazard units in safe handling of the hazardous chemicals over the next 5 years, ensuring that the growth is accompanied by focus on safety and risk reduction. India's chemical and petrochemical industry is poised for remarkable growth as we embrace innovation, sustainability, and self-reliance. The sector will play a pivotal role in realizing our vision of Viksit Bharat in 2047. With collaboration between government and industry and academia, India can continue to lead globally in chemicals and petrochemicals. Here I would also like to add that under the dynamic leadership of Prime Minister Modi, I as a minister assure you that we will leave no stone unturned for the progress of the petrochemical area and this sector to be developed. Let us work together to create a sustainable, innovative and prosperous future for India's chemical industry. I wish India Chem 2024 great success for fruitful discussions. Thank you very much for giving me a very patient hearing. Thank you. Thank you, Honorable Minister, for your valuable insights and sharing your vision with us today. We are deeply honored with your presence and your inspiring words. Thank you. I now invite Mr. Prab Das, Chairman, FICCI National Petrochemicals Committee and MD and CEO, HMEL Mittal Energy Limited, to deliver the concluding remarks and propose vote of thanks. Good afternoon. Our esteemed Chief Guest, Sri Jagat Prakash Nadda ji. We are really feeling and motivated after hearing the inspiring words. No stone unturned. That's the word we will always remember and will work for that. We are really feeling confident that we are being led by a leadership who cares, who wants to really get chemical and petrochemical sector not only very competitive but lead the world. I can assure you, we in India have excellent skill across this room and across India. I can assure you that we have expertise in technology, in operation excellence, in safety, energy conservation, digitization, sustainability, you name it. We have everything. We have a lot of potential. But we work under various constraints, and I'm sure the unfair competition which we are facing from various other countries, I'm sure that, with your support, we will be able to change this sector.
Today's event, it appears, is a game changer. Your vision and assurance has put a new energy in us, and from our side, we assure you that we will also leave no stone unturned to work with you to this sector, a leading sector in Indian economy and the world. Thank you, sir. We are very fortunate to have with us Honorable Chief Minister Gujarat, Bhupendra Rai Patel ji, Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh, Dr. Mohan Yadav ji, Honorable Chief Minister of Odisha, Shri Mohan Chand Majhi ji, Honorable Minister of State, Anupriya Patel ji, Honorable Minister of State Chemical and Fertilizer, and Sampath Saranji, Minister of State Odisha, Cabinet Minister Odisha. We, the captain of industry, couldn't have asked for more. Your presence itself shows the importance which the government is giving to chemical and petrochemical sector. I feel that, with this presence of the galaxy of leadership here, this sector is going to prosper. The time has now come for chemical and petrochemical sector for next few years, as was told by our leader, Nikhil Meshwani ji. The states you have already mentioned have taken various initiatives, and we feel confident that we will work with you to make more investment in these states and other states in the country. I can assure you, Honorable Minister, that your dream of getting 1 trillion economy, 1 trillion turnover of this sector will come much before 2040. I will also like to thank Honorable Secretary Nivedita Shukla Verma and Joint Secretaries, another officer of Petchemical and Petrochemical. They have been a great support to us, not only for this function, but throughout, and I hope that the leadership which you have given will make this sector prosper. I am also thankful to Mr. Nikhil Meshwani. He is the leader of the industry, and Class Rating, who has given a different perspective. I am also thankful to our colleague Deepak Mehta ji for the support which he has been giving. Lastly, let me also thank all the delegates and participants across India and the globe, and the enthusiasm which you have shown. I'm sure that this sector is going to take a lead in India and the world. Thank you. With this, we conclude the insightful inaugural session. We once again thank our esteemed chief guests, guest of honors, and esteemed dignitaries for joining us. Thank you very much for your gracious presence. And ladies and gentlemen, too important, please come forward for a group photograph.